Hello everyone. Today we are going to discuss some more items how they will get treated in the estimation of national income by income method. The first is value of bonus shares received by shareholders of a company. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव्ड, शेयर होल्डर्स ने रिसीव किया है, खरीदने और बेचने का काम नहीं हुआ, कमीशन रिसीव नहीं हो रही है, शेयर होल्डर्स को कंपनी से ही प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है. सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज बोनस शेयर्स आर फाइनेंशियल असेट्स एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेकेंड पॉइंट इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लोन टेकन बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय ले रहा है, उसका काम नहीं है ये. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल, काम नहीं मीन्स लोन देने का काम नहीं है, एक जनरल से एक छोटा सा लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट दे रहा है. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक ऑन अ लोन टू बाय अ कार. किसी से हमने गाड़ी खरीदने के लिए छोटा सा लोन ले लिया या बैंक से ही ले लिया आपने पर्सनली. ऑप्शन में एक और ऑप्शन हमें गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर परचेजिंग अ कार. अब फ्रेंड से ले रहे हैं, फ्रेंडशिप सर्कल में ले रहे हैं, गिफ्ट तौर पे ले रहे हैं. इट मीन्स देयर इज़ नॉट अ बिजनेस, इट इज़ नॉट अ वर्क टू गिव लोन कि उस पर होने वाली इनकम को हम ऐड करें नेशनल इनकम में. नो, यहाँ जो लोन दिया जा रहा है, दूसरी बात, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए है, प्रोडक्शन एक्टिविटी के पर्पज से नहीं दिया जा रहा. सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ national income. Third point is given as payment of interest by banks to its depositors or payment of interest by a firm to households. अब देखो यहाँ काम हो गया ना इंटरेस्ट देने का, बिजनेस भी हो कह सकते हैं हम इसे, और रेगुलरिटी में इंटरेस्ट मिल रहा है. सो इट विल बी अ काइंड ऑफ फैक्टर इनकम. सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. Fourth point is given as interest received on loan given to a foreign company in India. It is a factor income from abroad. So yes, it will be included in the national income. Next point is interest received on debentures. Interest received on debentures means debenture is a sort of loan taken by a production unit which uses the money in producing goods and services. So interest received on debentures is a factor income, right? So it will be included in national income. Next point is payment of interest on borrowings by general government. Government borrowing कर रही है यानी कि consumption purpose से कर रही है. So it will not be included in the national income. Next point is, that one is seventh point, money received by a family in India by the relatives who are working abroad. For example, remittances from abroad or scholarship given to Indian students studying in India by a foreign company. Children, I am giving examples for this point only. Financial help received by flood victims, expenditure on old age pensions, gift received from the employer in the form of festival gifts, gifts on Independence Day, Rakhi celebrations, whatever, etc. So it will not be included in the national income. Reason, it is a factor payment which is received but without any contribution to production. So it is not a factor income. Eighth point is payment of corporate tax by a firm. Children, it is a transfer payment. Corporate tax accrues to the government. It is not received by the owners of factors of production. So it is not a factor income. It will not be included separately in national income. It is a part of profit which is already included in that. So there will be no separate treatment for corporate tax. Next point is compensation given by insurance company to an injured worker. अब इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को नहीं दिया है, इस चीज़ की हमने कहीं बात नहीं की थी. सो इट इज़ नॉट अ कंपोनेंट, it will not be included in national income. Next point is salaries paid to Russians working in Indian embassy in Russia, as it is a factor income paid to abroad. हम salaries दे रहे हैं
रशियंस को, जो कि इंडियन एम्बेसी में काम कर रही है रशिया के अंदर, यानी कि इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम टू गेट नेशनल इनकम. It will be included in domestic income of India, but it will not be included in national income of India. Next is earnings of shareholders from the sale of shares. Earning of shareholders from the sale of shares. Shareholders की earnings हुई है, किसी broker को brokerage नहीं मिली है, so it will not be included in the national income, because neither goods nor services do not contribute to any production of goods and services here, because these are mere financial assets, shares and bonds. Next point is capital gains to Indian residents from sale of shares of a foreign company. Capital gains, अचानक से होने वाला फ़ायदा, as I explained you earlier. Capital gains, capital losses will not be included in the estimation of national income, as they are not giving any addition in the flow of goods and services. Next point is receipts from sale of land. Receipts from sale of land. Children, land is a free gift of nature and cannot be produced, so it will not be included in the estimation of national income. Next point is, the last one is royalty. Now what do you mean by royalty? First of all, as not given in the VK publication book, amount received by the owner for granting the leasing rights of subsoil assets. With an example it will be understand, like royalty income by an author of a book from the publisher. एक ऑथर अपनी बुक लिखता है, अब डायरेक्टली तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी ना बेटा, तो कोई ना कोई पब्लिशर होगा जिसके अंडर वो काम कर रहा है, कोई ना कोई पब्लिशर होगा जो उसकी राइटिंग को, उसके कंटेंट्स को, जो वो लिख रहा है उसे पब्लिश करेगा. सो द पब्लिशर व्हेन पब्लिश हिज बुक, व्हेन इट विल गो टू द मार्केट, इनकम विल बी जनरेटेड. सो इन the type of royalty, in a kind of royalty, it will be given to that person who is the author of that book in actuality. Clear? That is the royalty. So it will be included in the national income, as royalty is a productive income. Clear? Children, these are the important points need to be done. Kindly do these points, listen carefully whatever is discussed here. You can revise these points again and again from this video. Afterward we will go for the more practical questions. Thank you.